Good evening, sir. Yes, good evening. Am I audible, sir? Yes, good evening. Am I audible? Yes. Sir. Yes. Sir, ठीक से आ रहा है ना? Yes. Okay, sir. Thank you. The last day we have discussed in carbon Last week, हाँ sir, carbon discuss किया था. हाँ, yes. Carbon discuss किया. हाँ, discuss किया. Yes, sir. कहाँ तक डिस्कस हो गया था? मेटल क्लस्टर हुआ था कि नहीं? नहीं हुआ था सर. Yes. ONC topic is subtopic is today's metal cluster. What the main application of metal cluster? Explain briefly. Okay, sir. From metal cluster, that means we can from various type of, that means the structure, that means those are closo, nido, arachno structure basically. From metal cluster, we can from the, that means what it called basically application. तो इसका मतलब कैसे तो पता नहीं है application इसका metal cluster का. कोई नहीं, आप explain कीजिए metal cluster क्या है? हाँ sir. Metal cluster is basically that means those type of compound which are formed by that means with the bulky space basically. Yes, bulky molecule or what it's called basically. 1 minute. Metal are, that means metal bound directly. Okay, metal those in those type of structure, metal bound directly and from a very giant structure like that. Okay. Yes. And it has metal bond also. It has metal bond also. Metal cluster, in metal cluster, metal bond also there. Yes, sir. There are two types of metal cluster in there. One is low nuclear in carbonyl system. There are two type of metal cluster. One is low nuclearity metallic cluster. Another one is high nuclearity metal cluster. That means if the metal atom is less than that means 5, then it is called low nuclearity metal cluster. And if the metal number of metal atom is more than 5, then it is called high nuclearity metal cluster. Suppose I am taking example Fe2CO9. Fe2CO9 is a low nuclearity metal cluster, carbonyl cluster, LNCC, low nuclearity carbonyl cluster. Whereas the something like CO6, something CO6, CO12, these are like high nuclearity carbonyl cluster. Yes. Yes, sir. And cluster are of basically two types. One is it can be an organic cluster also, and it can be organometallic cluster also, and it can be inorganic cluster also. Organometallic cluster, that means those type of cluster which has metal carbon bond in there, that means metal bond and metal carbon bond is there, then it is called organometallic cluster. And if there is metal bond and metal bond with that means inorganic, something like halogen, chlorine. Suppose I am taking example Re2Cl2-, that is a inorganic type of cluster. Inorganic cluster is there. Yes, sir. Yes, what the difference between metal cluster and carbide cluster? What the difference? Sir, in metal cluster, that means only metal is there. Okay, in metal cluster, metal and that means carbonyl, something like ligand are there. But in carbide cluster, there may be presence of carbon. Suppose I am taking this one, OS5 CCO12. That is an example of carbide cluster. Here, carbon atom is inserted in the cluster. That is called, in the vacant side, there it is called carbide cluster. Yes, sir. What the difference between yes, carbide cluster and metal carbonyl cluster? Yes, sir. In carbide cluster, I have already told. Carbide cluster, carbon is present. That means in vacant side, carbon is present. And in carbonyl cluster, only metal bond and carbonyl ligand is there. In carbide cluster, there may be presence of carbon in the, there presence of carbon in the cluster. Yes, sir. Yes.
Next is homogeneous catalysis. What the difference between homogeneous and heterogeneous catalysis? Explain with the Yes, example. sir. If the catalyst, that means if the catalysts are soluble, soluble with the substrate, okay, soluble with the reactant, then it is basically called homogeneous catalysis. That means if the catalysis process, if the reaction process, if the catalyst is have the same phase with the substrate phase or reactant phase, then it is called homogeneous catalysis. If the catalysis is basically that is called what it is called, if the catalysis does not dissolve, does not soluble in the with substrate, then it is called heterogeneous catalysis. Yes, heterogeneous catalysis. Suppose I am taking example of that means in some example, that is one minute, organic reaction. Basically, organic reaction is hydrogenation of alkene. Okay, hydrogenation of alkene. If we put hydrogenation of alkene, there is hydrogen gas is there. This is also a gas. We use palladium. Palladium is a solid. Here, palladium does not dissolve with this molecule. So yes, does not dissolve with this reactant. So therefore, these are called heterogeneous. Palladium now is in a heterogeneous catalysis. If the catalyst has the same phase, then it is called homogeneous catalysis. Yes, sir. The homogeneous catalysis rate is, yes. The difference between homogeneous and heterogeneous catalysis is homogeneous catalysis react very slowly, whereas the heterogeneous catalysis, no, sorry, 1 minute, ये मतलब गड़बड़ी हो गया. Homogeneous catalysis मतलब react very fast, I think, and heterogeneous catalysis react very slowly. But the main that means drawback of homogeneous catalysis is we cannot separate it from the product. Yes, because it is soluble. Whereas heterogeneous catalysis we can separate it from the product, separate from the medium. Yes. Is it okay, sir? और Yes. कुछ था बोला एक बार रिवाइज करने से हो जाएगा ये. Yes, बिल्कुल हो जाएगा. हाँ सर. Example of homogeneous catalysis. Any example? Sir, homogeneous catalysis, we can take example of, that means Wilkinson catalysis. Wilkinson catalysis is one of the example of homogeneous catalysis. That means IRCl PPHT3. IRCl PPHT3 is an example of homogeneous catalysis. Yes, sir. Whereas heterogeneous catalysis is hydrogen in presence of palladium is a heterogeneous catalysis. Yes. Yes. Next, move on hydroformylation of alkene. Yes, sir. The hydroformylation of alkene. What the example of hydroformylation of alkenes? Okay, sir. So suppose I am taking this reaction, that means this alkane RCH-CH2. If we put the catalyst HCO, CO4, or if we put catalyst hydrogen in presence of CO2, CO8, okay, this alkene is converted basically to CH2, C double bond H. Okay, so this is basically the catalysis process. That means a hydroformylation reaction. This is basically the hydroformylation of alkene. Yes, sir. Hydroformylation of alkene. Is it okay? Yes, sir. What is Wacker process? What the main application of Wacker process? From Wacker process, we same thing. That means from with the help of palladium catalyst, we can get the, that means aldehyde. Yes, we can get the aldehyde. Is it okay? Yeah. From Wacker process, we can get the aldehyde also. Yes, aldehyde, acetaldehyde basically. That means addition of oxygen in alkene molecule.
is basically Wacker process with the help of catalyst PdCl4 2-. We take co-catalyst, that is copper 1 catalysis. Copper chloride is there, CuCl. Yeah. What is olefin metathesis? Olefin metathesis, sir. Olefin metathesis is basically there are two types of olefin metathesis: ring opening olefin metathesis. 1 minute, sir. Olefin metathesis method forms that means polymerization of olefin. I think olefin metathesis यही था शायद. Polymerization olefin और कुछ था ये क्या होगा? Sir, I have forgot that thing. That means polymer मतलब ये क्या बोलते हैं? रिंग ओपनिंग ओलिफिन मेटाथेसिस, रिंग ओपनिंग मेटाथेसिस भी था, रिंग क्लोजिंग प्रोसेस भी था. मतलब ये with the help of carbene. Yeah, with the help of carbene. Yes, yes, sir. With the help of carbene, we can do this. Is it correct, sir? Yes. Next, move on. Cross coupling reaction. What is cross coupling reaction? How many types of cross coupling reaction? First of all, main basic question is what is coupling reaction? What is the difference between coupling and cross coupling reaction, and how many types of cross coupling reaction? Yes, explain one by one. Yes, sir. Coupling reaction is basically, that means condensation reaction. That means if two reactant molecule can combine with the help of some type of catalyst. In organic, we can say like there is aldol condensation is there, where we can, that means condense two aldehyde molecule or two ketone molecule. Similarly, with the help of some type of catalyst, palladium catalyst, especially palladium or tin catalyst or zinc catalyst, we couple the reaction. Couple the reagent. Okay, couple the substrate or couple some of the active compound. Then it is called coupling reaction. Coupling reaction basically, if the coupling reaction done with the same molecule, then it is called coupling, normal coupling, or if it done with the different type of molecule, then it is called cross coupling. Is it correct, sir? Yes. ये मतलब इसका coupling reaction example बताइए का तो example. हाँ sir, coupling तो main famous example is Suzuki coupling is there. That is, another one is Hack coupling is there. Hiyama coupling is there. Steel coupling is there. Negishi coupling is there. There are so many. Sujitros coupling is there. There are so many coupling reactions. That means basically in coupling reaction we use palladium. That means unsaturated catalyst. Okay, unsaturated catalyst of palladium, nickel, palladium or steel. Tin or like zinc. Okay, that basically we use. Yes, sir. Sir. That means next is what is polymerization, and what the difference between polymerization and oligomerization? Polymerization and sir? Oligopolymerization. सर पता नहीं oligopolymerization मतलब. Do you have any idea what Ziegler-Natta catalysis? Ziegler-Natta catalysis. Yes, I know that. Ziegler-Natta catalysis basically for that means stereoselective formation of the that means polymer we use. Ziegler-Natta catalysis is basically this one: titanium tetrachloride and triethyl aluminum is basically called Ziegler-Natta catalyst. Titanium tetrachloride and aluminum, triethyl aluminum is called this. Yes, sir. What is ferrocene? What the difference between eclipse and ferro? Stage ferrocenes. What the uses of ferrocene?
Yes, sir. That means ferrocene is Fe C5H52. Okay. That means that is called bis cyclopentadiene dinyl iron. This IUPAC name. If the cyclopentadienyl ligand, okay, if the cyclopentadienyl ligand are in same phase, okay, then it is called eclipse. Okay, eclipse conformation, eclipse ferrocene, and if the one of the cyclopentadiene is like that, and another that means both are in altering arrangement, then it is called staggered. Okay, staggered ferrocene. In eclipse ferrocene, the main difference is the point group. Point group is eclipse ferrocene D5H, whereas in staggered ferrocene the configuration is D5D. Okay, and from ferrocene we can that means this we can use as a very there are very much reaction we proceed with ferrocene. There is alkylation reaction, there is nitration reaction, there is that means many reaction we can proceed. There are many various type of reaction with ferrocene. Yes, is it okay, sir? Application of ferrocene. Yes. What is organometallic polymer? Organometallic polymer. Organometallic polymer. What is? No idea, sir. Organometallic polymer. तो आप एक बार बोल देंगे तो मतलब हो जाएगा सर, याद आ जाएगा. Organometallic polymer. A ferrocene waste condensation polymer is an example of organometallic polymer. Yes, no. Condensation polymer based on the rigid rod polymer polyenes. Yes, yes. Yes, this is the example of organometallic polymer. Yes, no. Okay, sir. Yes. You remember? No problem. You look them. You have to study about this topic. Yes, no. Yes, sir. That means हाँ sir. ये तो basic है almost. हाँ. Yes, basic. Organometallic. हाँ sir. Basic ही आएगा. Next, bioorganometallic chemistry. What is bioorganometallic chemistry? What the example? Bioorganometallic chemistry basically that means those type of that means we can use hemoglobin, myoglobin, all are that means bioorganometallic with there is metal ligand bond is there, and that is why that is called bioorganometallic. Hemoglobin, myoglobin is there. Bioorganometallic chemistry. No. Yes, vitamin B12. हाँ sir, cobalamin, yes. Vitamin B12 is there. Yeah. हाँ sir. Yes, almost OMC is completed. Last question is what the uses of OMC in human life and our society? Any 5-10 point? Okay. So basically, with the help of organometallic chemistry, the first thing is we can predict the that means there are those natural, that means in our human body those natural what is called natural pigment or natural thing, that means we can describe the structure, we can describe the color of that also. That means from organometallic chemistry the hemoglobin is there by the help of with the help of organometallic ligand and organometallic complex. Hemoglobin, myoglobin is there, and with the help of organometallic chemistry we can prepare many anti-cancer drug, anti-malarial drug, or another antibiotic, everything from with the help of organometallic chemistry. And with the help of organometallic chemistry, these are the main two factors. Yes, or any factor basically.
नो सर, नो आइडिया है। यूज दिस वन, और कहाँ पे होगा सर? मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, कार्बोनिल, कार्बोनिल का तो कुछ मतलब यूज, दिस वन। देखो ओएमसी के बहुत सारे यूजेस हैं। हाँ सर, चलो। जैसे मेटल कार्बोनिल और का कहाँ यूज करते हैं, एक 1 बाई पॉइंट वाइज चलना है, कहाँ यूज किया जाता है बताइए। मेटल कार्बोनिल साटो, that means in case of catalyst we use basically for the catalysis process, catalysis process ही यूज करते हैं। हाँ सर, मेटल कार्बोनिल for the कैटालिसिस में, यस for कैटालिसिस में for यूज किया जाता है। फॉस्फीन का that कहाँ means, यूज होता है? हाँ सर, and for that means hydroformylation reaction basically we use this carbonyl complex hydroformylation reaction, yes, and यस, और कार्बिन और तो मेटल कार्बिन और कार्बाइन्स का कहाँ यूज होता है? पॉइंट वाइज चलना ना, इस तरह से हमें यूज निकालने पड़ते हैं हमें हाँ points। हाँ सर, कार्बिन और कार्बाइन का that means पोलीमराइजेशन प्रोसेस में यूज करते हैं हम लोग, यस पोलीमराइजेशन होता है। रिएक्शन में। हाँ पॉलीमर का सोसाइटी में बहुत सारे यूजेस हैं, हाँ है ना, हाँ हाँ, लिविंग लाइफ पोलीमर, सोसाइटी। हाँ सर। मेटल क्लिस्टर के बताइए आप क्या यूजेस हैं, मेटल क्लिस्टर। मेटल क्लस्टर का मुझे सर पता नहीं है, मेटल क्लस्टर कहाँ यूज करते हैं बात, मेटल क्लस्टर, लो बेसिकली न्यूक्लियर, इट इज, नॉन न्यूक्लियरिटी कार्बोनाइल होते हैं, हाई न्यूक्लियरिटी होते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो मतलब कहाँ यूज करते हैं उसको तो पता नहीं सर। उसका जो रिएक्शन रेट है ना, जैसे पॉलीमर में हम यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे यूज किया जाता हाँ, है कि ये बढ़ाने के लिए रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ओके सर, यूज ऑफ, ओके सर। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस का कहाँ यूज होता है? कैटालिसिस का, बेसिकली कैटालिसिस में ही यूज होते हैं, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, कैटालिसिस हाइड्रोफॉर्माइलेशन में। का कहाँ यूज होता है? ऑक्सीजन होता है, टर्नर और कार्बोनिल, कहाँ यूज किया जाता है इसको, हाइड्रोफॉर्माइलेशन को? That means are for the preparation of aldehyde. One is there, Monsanto, for the preparation of glacial acetic acid, Monsanto acetic acid. Yes, yeah, yeah, yes. That is the main. That means ऑक्सीडेशन one. होता है ना, ऑक्सीडेशन, तो जो भी रिएक्शन की रेट बढ़ानी, ऑक्सीडेशन होगा वहां पे यूज करेंगे हम इसको। हाँ सर, सर इसका मतलब हम लोगों का वहाँ पे मतलब मैकेनिज्म पूछेगा क्या, मतलब इस रिएक्शन का मतलब शायद हाइड्रोजनेशन का, हाइड्रोफॉर्मेशन का, इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करके नहीं, देगा क्या? देखो वो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको हर एक चीज में परफेक्ट रहना है, ठीक है। आपको पहले टॉपिक जो मिलेंगे, जैसे मेरे 5 टॉपिक बोले हैं, वो पूछेंगे वो, उनमें से आपसे टीचिंग कराएंगे, तो जो टीचिंग कराएंगे उनमें से पूछेंगे, उन ओके सर, क्वेश्चन से। हाँ सर, सर मैं, यस, हाँ, अब क्रॉस आप कपलिंग बोलिए सर। रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन का कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज किया जाता है? Coupling, there is very much, that means basically coupling reaction for the organic synthesis. Basically, that means coupling reaction with the help of organometallic chemistry. The research is very progress now with the help of Suzuki coupling. Yes, Suzuki coupling तो बेस्ट है ना, मतलब कुछ कुछ कंडेंस करने के लिए या सब कुछ करने के लिए Suzuki coupling. That means basically for the research purpose, coupling reaction is used. Research purpose and synthesis of organic molecule, and for synthesis of some of the medicinal product we use coupling reaction. Yes, यस, basically. अब पॉलीमराइजेशन आ गया, पॉलीमराइजेशन, ऑल्गो पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का बहुत सारे यूजेस हैं, जिगलनाटा कैटालिस्ट में, है ना, ह्यूमन लाइफ स्टीरियो सिलेक्टिविटी का के लिए, बहुत यूज है, हर जगह पॉलीमर है। लिविंग में हर जगह यूज किया जा रहा है, किचन में यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज है हाँ पॉलीमर, बहुत सारी लिविंग ह्यूमन लाइफ में पॉलीमर यूज होता है। और हाँ उसके सर, बाद ऑर्गेनोमेटेलिक पॉलीमर है, तो विटामिन B12 है, वो भी बहुत सारी यूज किए जाते हैं, है ना, हाँ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन है, उसको बहुत सारे यूज, एक पॉइंट वाइज आप देखोगे तो बहुत सारे पॉइंट निकल आएंगे, लगभग 10 to 20 पॉइंट्स, तो इस तरह से हमें एक एक करके चूज करना होता है, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो OMC हाँ हो सर, गया। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसकी ड्रॉबैक लिमिटेशन और कर लेना, मैं भेज हाँ दूंगा। सर, ओके सर, आप एक बार भेज देना। और सर मैं मतलब सोच रहा हूँ आज मैंने एक बार मतलब मतलब ऐसे ही आइडिया लिया था, मतलब अगर वो लोग मतलब 5 टॉपिक पूछेगा
तो मतलब पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स बोलूंगा, ओके। Yes. फर्स्ट आई विल टेल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, आफ्टर दैट केमिकल काइनेटिक्स, ओके, देन कोऑर्डिनेशन, देन आपको मतलब क्या है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन, एंड देन रिएक्शन मैकेनिज्म, एंड देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई विल टेल। इज इट द ओके, मतलब यस, कमांड देख लीजिए, आपकी सबसे बेस्ट कमांड किस पे है। अभी तो हम फाइनल हाँ, मॉक भी लेंगे प्रैक्टिस, तो आप आपके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसके अंदर आ रहा है? मतलब फिजिकल में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मतलब ऐसे तो मतलब देखे तो केमिकल काइनेटिक्स इजी मतलब लगता है इजी, और यहाँ पे मतलब मेरा तो मतलब जी से मतलब अभी नहीं है, ऐसा है। तो कोई भी टॉपिक नहीं होता। आप कितना बेस्ट एक्सप्लेन दे सकते हैं, अपना बेस्ट एफर्ट कितना लगा सकते हैं, कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ सर, हाँ सर, यस। ये तो बताइए आप। और मतलब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं रह गया, मतलब सारा टॉपिक में तो थोड़ा थोड़ा तो कॉमन है ही, लेकिन ये 5 टॉपिक सारे से मतलब मतलब नहीं है ना, ऐसे तो आपको सारी पूरी हाँ, केमिस्ट्री में आते हैं सारे टॉपिक, उससे मतलब नहीं है ना। आपसे अभी टीचिंग बोल हाँ, दिया जाए एग्जैक्ट कि आप एक्सप्लेन कीजिए, हैं, हम्म, तो वो आप एकदम रैंडम पूछा जाएगा ऐसे ही ना। आपको ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए कि तुरंत जाएंगे, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और व्हाट द डिफरेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इस तरह से एक्सप्लेन करते जाएंगे आप, तो इस तरह से बताएंगे एकदम जीरो से थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है। इस तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लगेगा आपको टॉपिक ऐसा है, बिल्कुल एकदम इस तरह से होना चाहिए। इस तरह से हाँ टॉपिक सर, करने हैं आपको, समझे, टीचिंग करनी है आपको, कोई ओरल इंटरव्यू नहीं देना। टीचिंग में आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, और सामने जो लोग बैठे हैं 5-6 लोग, यूपीएससी में तो 5-6 से कम, मतलब मिनिमम 5 कैंडिडेट होंगे, मैक्सिमम 8 कैंडिडेट होते हैं इंटरव्यू में। तो वहाँ पे एक प्रोफेसर होगा, एक साइंटिस्ट होगा, एक साइकिस्ट होगा, एक इस तरह से लोग बैठे होंगे वहाँ पे। वो देखते हैं, लगभग 6 to 8 कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू, तो वो देखेंगे आपको, आप वहाँ जा रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप किस तरह से गए हैं, आप बोल रहे हैं किस तरह से, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, टीचिंग कर रहे हैं तो बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्लेनेशन प्रेजेंटेशन क्या है, तो वो सारी चीजें कुछ देख पता चला। यूपीएससी में, यूपीएससी का कोई सा भी एग्जाम है और उसका इंटरव्यू है, तो अच्छा खासा आप मान लीजिए इंटरव्यू आपका अच्छा होगा। जो और असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं ना, जो मान लीजिए 10-15 मिनट, यहाँ पे आप मान लीजिए 15 to 30 मिनट आपका अराउंड जाएगा इंटरव्यू। तो कैंडिडेट ही कम है, 11 कैंडिडेट है, एक दिन में हम उनको इंटरव्यू लेना है, तो आराम से आधा आधा घंटा, 20-30 मिनट इंटरव्यू लेंगे आराम से वो। हाँ सर, ये यस। इस तरह से, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर, कॉन्फिडेंस मतलब है उसको सामने लाइए, इस तरह से आपको करना है, जो लगे नहीं आपको कि बिल्कुल न्यू है आप, या वैसे इस तरह से। हाँ, हाँ, और हाँ सर, मतलब मतलब ऐसा लगना चाहिए कि मैं हर रोज पढ़ाता हूँ, ऐसा लगना यस, चाहिए। या ऐसा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस। और सर मतलब ये मतलब जो प्रॉब्लम है, मतलब बीच में थोड़ा अटक जाता हूँ, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम मतलब नहीं है, हाँ कोई सर, प्रॉब्लम वो नहीं, तो बस बहुत। कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ सर, सर और एक बात पूछना था। मेरा एक आज मतलब मैंने क्वेश्चन मतलब बना लिया है, जो आपको बोला था ना, मतलब 4-5 क्वेश्चन एचआर का क्वेश्चन, मतलब क्यों यहाँ ज्वाइन करना चाहते हो, ऐसे ऐसे ये सब क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा वर्ड फाइल में। तो वहां पे मतलब क्या हुआ है, आज एक मेरा क्वेश्चन मन में आया कि तुम तो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ा रहे हो, तो मतलब अगर तुम इस जॉब में सिलेक्टेड हो गए, तो मतलब उस जॉब का क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये मतलब हाँ मतलब तो उस ये स्टूडेंट क्वेश्चन लोगों का। नॉर्मल है, ये तो मैंने आपको बताया ही था पहले, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल किया ही जाएगा कि आप मतलब यू हैव ऑलरेडी असिस्टेंट लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर इन असम डिपार्टमेंट, तो व्हाई विल यू हाँ, जॉइन इन यूपीएससी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, व्हाट द रीजन? basically sir, for the reason to get my that means I have already served here around 3.5 years, so I have already experienced many more things in, that means, government polytechnic college, which I did academic administration also, that means in I that means I have solved many admission process, and in college I am now as a working as a institute nodal officer, that means working as a scholarship in charge also. So there are lots of things I have worked for the 3.5 years.
to get some more experience or to elaborate. That means that means what it's called basically, to elaborate or get more experience or to yeah, that means वही कैलिबर के लिए मतलब अच्छे से वहाँ पे. And since I have guided almost around 200 plus students through my that means in undergraduate level or master degree level. So I wanted to this job wanted to take this opportunity through national to national level also, so that I can guide many more students. Yeah, I can guide many more students since I am working as a since I have guided through YouTube also, and I can give the MOOC. One of the that means one process is their MOOC process, online process is there. There's like NPTEL MOOC was is MOOC MOOC process is there. So MOOC for MOOC I can give that means I can teach from MOOC also. Yeah, I have right that. Yes sir. यस, गुड है, नहीं आपने सर ये एक्सप्लेन किया, लेकिन इसमें से और सारी चीजें और एक्सप्लेन कीजिए। जैसे हाँ आपका सर मतलब डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट से आप यहाँ आ रहे हैं, वो आप गाइड करेंगे, वो ठीक है, वो आपका अलग है। लेकिन ये नेशनल लेवल का है, आप इसमें यूपीएससी में जाएंगे, एक स्टेट लेवल है, तो उसके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड भी चेंज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा। कौन अच्छा है कौन Sir, I have written like that. The becoming an assistant professor is a natural career progression for me. This is a very great opportunity for my growth and development also. Yes, I am. That means I am basically eager to take on more responsibilities, such as mentoring student, contributing to research project. Yeah, I can contribute to departmental and institutional decision making and shaping the future of the institute also. Yes, by joining as an assistant professor, I am to enhance my academic career also, expand my expertise, and to make a more significant contribution to academic community. Yes, this will be the best answers. I think I have written like that. Is it okay, sir? यस, Yeah. मतलब ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, मतलब मेरा क्वेश्चन था कि उस मतलब तुमको अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मतलब उस बाकी स्टूडेंट का क्या होगा जो मतलब तुम्हारे कॉलेज में है, तो मतलब इसका क्या आंसर दूं, मतलब ऐसे तो क्वेश्चन आ सकता है। देखो आपको यहाँ सिलेक्ट, जैसे वाई शुड आई सिलेक्ट इन यूपीएससी, मैं आपको हाँ इसमें क्यों सिलेक्ट करूँ, व्हाट द रीजन, ठीक है ना, ये आपको, तो वहां से आप आ रहे हैं तो लेवल चेंज हो रहा है ना, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। हम स्टेट लेवल पे जॉब कर रहे हैं, उसको हम चेंज करके हम नेशनल लेवल पे आना चाहते हैं, और यूपीएससी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यूपीएससी, यस उसमें हम ज्यादा अच्छा लेवल पे काम कर सकते हैं, ये कंपेयर टू स्टेट। असम से हम नेशनल लेवल पे आ सकते हैं, तो ये पे एक नंबर वन इंस्टीट्यूट है, उसमें हम आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं कंपेयर टू असम से। और वहां पे क्या होगा, अब ये बोलेंगे वो वहां से क्या होगा, तो वो बोला जाएगा वो जो पोस्ट है उसको वैकेंट होके दोबारा रिक्रूटमेंट निकलेगा तो उसको फिल कर दिया जाएगा। हाँ सर ये सही बोलोगे और आप। इसमें ये है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग कैंडिडेट है वो तैयारी करेंगे तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी वहां पे, वहां अपॉर्चुनिटी अदर कैंडिडेट को मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर। हाँ हाँ सर यस हाँ आई कैन से लाइक दैट यार। ये ना, ऐसा तो है नहीं कि वो कैंडिडेट खाली रहेगी। और सर तो बाकी और सर क्या टॉपिक में क्या करूँ, बायोइनॉर्गेनिक तो देख लूंगा अच्छे से, मतलब हो जाएगा, अभी बायोइनॉर्गेनिक तो इतना नहीं है, मतलब थोड़ा लिटिल लिटिल है अभी तो। साइड बाय साइड क्वांटम देख रहा हूँ मैं, क्वांटम मतलब अच्छे से पढ़ रहा हूँ अभी थोड़ा थोड़ा। और और सर क्या देखना बेहतर रहेगा पूरा आपसे मतलब। देखना है, कोई बेहतर नहीं है, सारी चीज हाँ सारे टॉपिक करने हैं आपको, हाँ आपको सर आज टॉपिक करने हैं रैंडम, इससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि रैंडम इंटरव्यू हो जाएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना फिर। हाँ सर, रैंडम होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो इसलिए
तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई प्रॉब्लम आए, जो मेरे यहाँ तैयारी कर रहे हैं उसे प्रॉब्लम आए। हाँ सर। ठीक है, तो ये है मेन चीज। हाँ सर। तो नेक्स्ट और कौन सा टॉपिक करके आए हैं आप, अभी कर रहे थे और टॉपिक? सर थोड़ा क्वांटम क्वांटम देख रहा था मॉर्निंग में। हम्म। इतना तो नहीं हुआ क्वांटम, मतलब जितना हो सके उतना देख के जाऊंगा मैं क्वांटम के लिए। मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब वो डिफरेंस वगैरह ऐसे, और कम्यूटेटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, ये सब आइजन वैल्यू वगैरह, ये तो देख के जाना होगा। हाँ सर। और पोस्टुलेट वगैरह देख के जाऊंगा अच्छे से। हाँ सर। तो अभी आप फोटो कर रहे थे, उसका क्या हुआ? हाँ सर, फोटो केमिस्ट्री तो उस दिन मतलब रिवाइज नहीं किया है, मतलब हो गया पहले। अभी आज से मतलब मैं रिवीजन भी चालू किया, मतलब हाँ, 3 आवर रिवीजन भी कीजिए, अराउंड जो टॉपिक रिवीजन। हो गए हैं, जो हाँ टॉपिक हो गए हैं उनको कीजिए आप। हाँ, मतलब आज से रिवीजन, मतलब केमिकल बॉन्डिंग आज मतलब रिवीजन किया हूँ। तो उसके बाद ऐसे ऐसे बाकी सब भी रिवीजन कर रहा हूँ। मतलब रिवीजन करूंगा एक साथ, मतलब एक दिन में ऐसे ऐसे, मतलब 2 to 3 आवर्स रिवीजन में दे रहा हूँ। और बाकी न्यू न्यू थोड़ा थोड़ा टॉपिक न्यू, और HR क्वेश्चन में भी एक 1 आवर देना पड़ता है, दूंगा अभी। हाँ सर। बाकी तो हो गया ऑलमोस्ट। हाँ सर, मेनली ऑर्गेनिक का तो इतना नहीं देखा, तो उसका क्या होगा। हेटेरोसाइक्लिक भी मैंने देख लिया था। हाँ सर। ऑर्गेनिक तो मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म से ही शायद ज्यादा पूछेंगे वो लोग, इसलिए रिएक्शन मैकेनिज्म ही देख लिया अच्छे से। इज नॉट इट सर, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में ही जियोसिस वगैरह आ जाता है ना। हाँ सर। बिल्कुल, हाँ बेसिक सर। सारे टॉपिक कर मतलब दीजिए अभी आप। अभी तो हम और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल पूरा होल रिवीजन भी तो करेंगे। अभी तो टॉपिक कीजिए आप अपने, हाँ सर। पूरा हाँ। कंप्लीट भी तो करना है अभी तो। हाँ सर। यस। यस सर। अभी तो तो इनऑर्गेनिक के सारे टॉपिक लूंगा मैं, ऑर्गेनिक के सारे टॉपिक लूंगा, फिजिकल के सारे टॉपिक लूंगा, स्पेक्ट्रो पूरा हाँ। लूंगा। तो वो सारा कराऊंगा रिवीजन ना, आपकी फाइनल जब होगा तब। हाँ सर। वो सब मतलब कब होगा सर, कब तक ये सब अभी चीजें। टॉपिक तो हों आपके कंप्लीट। हाँ सर। अभी आपके पास टाइम कितना है? 11 तारीख है, 10 दिन है, तो आप देख लीजिए जैसा भी है आप कर लीजिए आप, मैं तो रेडी हूँ। ठीक है, हाँ सर। आप टॉपिक पीछे तो चल रहे हैं, मतलब ताकि और कैंडिडेट है उनके फाइनल मॉक स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा सर। उनका हाँ एक हाँ। ऑर्गेनिक हो भी गया है, फाइनल इनऑर्गेनिक हो भी गया है। क्योंकि आप बीच में गैप कर देते हो ना, आप कहीं बिजी हो जाते हो, कहीं कुछ छोड़ देते हो, तो ये चीज। हाँ सर। बाकी कैंडिडेट तो अच्छा होगा शायद में मेरे से। हाँ, सबका सही है वो बात नहीं, लेकिन वो आगे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि गैप नहीं होता ना। सबका यही हाँ परफॉर्मेंस है, अच्छा किसी नहीं, मेरा काम है ना। मैं किस लिए बैठा हुआ हूँ, इसीलिए तो देखता हूँ ना, जो अच्छा नहीं करेगा तो उसको टॉर्चर किया जाएगा, मैं दोबारा रिवीजन कराऊंगा। आप देखते नहीं, आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करते हो ढंग से, तो मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ। मेरा मेन हाँ सर। पर्पज क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना, यही है ना। ये तो हाँ फॉर्मेलिटी सर। करनी, बस हो गए टॉपिक और चल दिया। हाँ सर। सिलेक्शन दिलाना है मेरा काम है पूरा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की सिलेक्शन हो तभी तो कुछ होगा। सिलेक्शन ही नहीं होंगे तो क्या मतलब है, फिर मेरा यहाँ बैठने का मतलब क्या है? हाँ सर। यस। यस सर। और बाकी और कोई बताइए, अभी और किस पर देंगे कि कल देंगे आप? कल मतलब कल मतलब मैंने हेटेरोसाइक्लिक देख लिया था, यस। हेटेरोसाइक्लिक दे दूंगा। हेटेरोसाइक्लिक और मतलब क्वांटम तो मतलब अभी इतना तो नहीं हुआ, क्वांटम मतलब डीप तक नहीं चला गया हमें, तो क्वांटम हो कोई जाएगा। दिक्कत नहीं आएगा, दिक्कत किसी टॉपिक में नहीं आता है, बस कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री कल हम डिस्कस करेंगे, हाँ सर। यस डेफिनेटली। है तो ना। हेटेरोसाइक्लिक एंड फोटो हाँ, तो केमिस्ट्री कल। पूरा उसका करके आना, बेसिक जितना कर सको आप। जिस हाँ सर। तरह से हेट्रो की पूरी सारी चीजें, बेसिक चीजें सारी हेट्रो की, फोटो पूरा ही नॉरिश टाइप 1 एंड 2, इसमें बहुत सारी हम चीजें डिस्कस करते हैं, तो वो सारी सब पूरा कंप्लीट करना, फोटो केमिस्ट्री। हाँ सर। हाँ सर ठीक है। ठीक है, ठीक है ओके। सर। गुड नाइट। टेक केयर। ओके सर, गुड नाइट। हाँ सर।